तस्मै नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. So welcome everyone. So yesterday we are discussing from Bhagavad Gita, verse number 2.3.30 to 3.35. And yesterday primarily we discussed this one nice shloka about art of doing Krishna conscious work, art of doing holy work. And we discussed about Mai Sarvani Karmani Sannyasa Adhyatma Chetasa. So Krishna is telling, O Arjun, learn to surrender all your works unto me. And how you will be able to do that? By having full knowledge of me. So have a full knowledge of me and do not have any desires for personal gain and profit. And in this consciousness, you should give up lethargy and fight. So we discussed how lethargy or inertia for spiritual life is an obstacle in the path of sadhaka. But in course of execution of duty, such lethargy or fight has to be given up. The laziness has to be given up. Like a mother, father, or anyone in doing any kind of activity, a person becomes lazy sometimes, and we discussed various reasons. Why do people become lazy? One reason is that they feel that there is nothing, no gain in this activity for me. मेरा क्या फायदा होगा इस activity में? And there is nothing to gain. Then a person feels lazy in doing that activity, or he may not be occupied, or he may not have sufficient skills to do that activity. And then we had a discussion a little bit about how a person should find out an activity or any occupation as per his psychophysical nature or as per his dharma. Because and we discussed two main qualities, that how to find out an activity which is suitable for us. So what are the two qualities discussed? Anyone remembers? We discussed that two Internal things. satisfaction, external competence. Yeah, so one should be internally satisfied in doing that activity, and one should be externally competent. So find out what are the activities which you feel that you are competent enough and you feel very satisfied in doing those activities. Now one devotee asked, Prabhu, I like sense gratification, very nice. Is that my dharma? Because I am internally satisfied and externally competent also. Yeah, that is not being talked about here. This is about doing the duties. Hmm? So that's why Prabhupada writes, one has to sacrifice everything for the goodwill of the Supreme Lord. And one should be Nirasi and Nirmama. Nirasi and Nirmama don't claim proprietorship over an activity. Like a Prabhupada gives an example of a cashier in the bank. The way cashier executes this duty, similarly, a devotee should take an inspiration from the cashier in the bank. He counts millions of dollars, millions and millions of dollars every day, but he doesn't claim ownership over even a 1 rupee only, and he doesn't become discouraged when the millions of dollars are taken away because he works in that consciousness. So the word comes mai, unto me. So when unto me comes, then we discussed about like what is the result of those people who execute the duties as per Lord's instruction. There are two kinds of people one people, those who execute the duties as per Lord's instruction, so they will become free from bondage. So here is an art given that how we should do our duties and become free from the bondage. On the other hand, those people who do not follow Lord's advice, they become more and more entangled in the bondage. So it is said there are principles to regulate attachment and aversion. So like attachment and aversion, they are the two sides of the same coin. So neither we should become too much attached
nor we should become too averse to doing activities. And he said, and there are some regulatory principles which are given. Like we discussed the example of a wine shop. Some people say, okay, I will take wine in a regulated manner. But if somebody is attached to taking wine in a regulated manner also, he said, no, bro, I'm very regulated. I only take once in a week wine. But no, slowly that also has to be given up. Because if one is too much attached to the attachment only or the regulation, then that may also become the cause of bondage. Prabhupada gives another example of a license which is given in the marriage. So a person is also allowed to connect with the woman. But that should not in itself become that regulation should not become attached. One should not become attached to the regulation because all such attachments are stumbling blocks on the path of self-realization. So they are stumbling blocks. They will reduce the speed in bhakti, such attachments. So Prabhupada writes, practice of sense gratification under regulations may also lead one to go astray. Like somebody is too much attached to eating sweets every day. He eats sweets undiscriminately, regularly, morning, afternoon, evening. Then such a person may be given a regulation that Prabhu, you are eating too many sweets. You are too attached to sweets. Okay, you reduce once in a day only. Now once in a day you will get sweets. Then slowly he said, okay, Prabhu, once in a day only, but I will eat once in a day so much because only once I get. No, even regulations are there. They may help to control, but one should not be attached to the regulation itself. So then today we'll discuss on the verse number 35. How it is far better to discharge one's duty very properly than to do someone else's duty nicely. Like sometimes you see Bharat Maharaj. In case of Bharat Maharaj now he was a sannyas, he was a Kshatriya. And Bharat Maharaj goes to forest to protect the deer. He goes to forest for spiritual realization. Now he has accepted higher duties. Although earlier his duties was were of Kshatriya, but now he has accepted higher duties. And another lower duty came, that is to protect the deer. So okay, as a human being it is okay to protect a deer because it's an animal, it's in need. But when somebody becomes too much overwhelmed, oh, this is my duty, this is my duty, even you know others duty very nicely, but it is important that one does the duty which is prescribed to him more nicely than doing others duty very properly. Like for an example now, let's say somebody is a brahmachari right now. As a brahmachari, there are certain restrictions for that particular ashram, right? Let's say he is not allowed to associate with a woman, or he should do as minimum interaction with women that only for the sake of service or almost avoid it. Now, somebody may say some woman is in a very great difficulty, and brahmachari may think, oh, actually, I know how to help in this difficulty. I know exactly. I know very nicely. Others cannot help. I know exactly this difficulty. So now he may take, okay, let me do and go and help him. Now he may be competent enough. He may be competent enough even to help in that activity, whatever some difficulty is there. But no, this is not his duty right now. It is far better to discharge one's prescribed duty, whatever is associated. So brahmachari's prescribed duties are swadhyay, and his prescribed duties are swadhyay, and this one uh, abhyasa. But it is important that one does his duties very nicely than discharging others' duty very properly. So let's come to the verse number 35, 3.35, and then we'll go ahead. Okay, 3.35. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् सधर्मे निधनं श्रेय परधर्मयुभावय परो धर्म भयावह. Now this shloka is very important again. Why? This is, I said no, there are two shlokas which are very misunderstood in Bhagavad Gita. Many people have a very different understanding about uh, these two shlokas. This is also one of the shlokas. Paradharmo bhayavaha. Like you know the story of like that this shloka, the last shloka which I mentioned,
Which one was the last shloka where it was written? I said that this is also misunderstood shloka. Anyone remembers? 33. What was the translation for that? Mm. Nigraham kim karishyati. Nigraham kim karishyati means what will the suppression do? Don't suppress your desires. Enjoy your desires to the fullest extent because suppression cannot help. So people misunderstand and take this shloka out of context. Similarly, this shloka is also used by some patriotic movements. Paradharmo bhayavaha parodharma. So, like sometimes we find Christians or somebody from Hindu becomes Christian or somebody becomes Hindu and Muslim, and in that time they use the shloka paradharmo bhayavaya. It is dangerous to change your dharma. You are Hindu, don't change. It is so sometimes they have Ghar Wapsi Andolan and become Hindu again. So parodharma bhayavaha. They use that shloka. एक line लेते आगे का in one sense it may be okay. Earlier he was a Sanatan Dharma follower, now suddenly has gone out of Sanatan Dharma. So thoda bahut we can relate it, but sometimes they misunderstand and mistake this one. Shreyan Swadharmo Vigunaha Paradharmat Swanushtitat Swadharme Nidhanam Shreya Paradharmo Bhayavaha. Yes, bro, please read. It is far better to discharge one's prescribed duties, even though fault, faultily, than another's duties perfectly. Distraction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duties, for to follow another's path is dangerous. Yeah. So Brahmana is there, Kshatriya is there, Vaishya is there. So here Arjuna is facing what difficulty? Although Arjuna is Kshatriya, Krishna is thinking, Arjuna is thinking, oh, I can actually behave like a Brahmana. I can be Brahmana. But sometimes, so I will let me do as I'll behave like a Brahmana, detached from all this. But Krishna is saying, even if your duty is to fight, even if you do your duty faultily, that is better than doing someone else's duty nicely. So, because doing one's duty like is dangerous, this path is very, very dangerous. Hmm? So let's see Prabhupada's translation. Why it is written like that? Yes, Prabhupada. One should therefore discharge his prescribed duties in full Krishna consciousness rather than those prescribed for others. Materially prescribed duties are duties enjoyed according to one's psychological Psychophysical. psychophysical condition under the spell of the modes of material nature. Spiritual duties are as ordered by the spiritual master for the transcendental service of Krishna. But whether material or spiritual, one should stick to his prescribed duties even up to death, rather than imitate another's prescribed duties. Duties on the spiritual platform and duties on the material platform may be different, but the principle of following the authorized direction is always good for the performer. When one is under the spell of the modes of material nature, one should follow the prescribed rules for his particular situation and should not imitate others. For example, a Brahmana who is in Just a minute. For example, yeah. Hmm. a Brahmana who is in the mode of goodness is non-violent, whereas a Kshatriya who is in the mode of passion is allowed to be violent. As such, for a Kshatriya, it is better to be vanquished following the rules of violence than to imitate a Brahmana who follows the principles of non-violence. Everyone has to cleanse his heart by a gradual process, not abruptly. However, when one transcends the modes of material nature and is fully situated in Krishna consciousness, he can perform anything and everything under the direction of a bona fide spiritual master. In that complete stage of Krishna consciousness, the Kshatriya may act as a Brahmana or a Brahmana may act as a Kshatriya. In the transcendental stage, the distinction of the material world do not apply. For example, Vishwamitra was originally a Kshatriya, but later on he acted as a Brahmana, whereas Parshuram was a Brahmana, but later on he acted as a Kshatriya. Being transcendentally situated, they could do so. But as long as one is on the material platform, he must perform his duties according to the modes of material nature. At the same time, he must have a full sense of Krishna consciousness. Hmm. Correct. So here Krishna is advising that there is sometimes a tendency
to give up one's dharma. Like I was telling one day, my brother was telling, he was so sentimentally, sometimes such some people some make statements that okay, प्रभु ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के ना संन्यास ले लो, और लाइक कुंभ में गए हो चलो सन्यासी ले लेते हो, कितना अच्छा जीवन है कुंभ वालों का और इनका सन्यासी होगा, ये क्या इतना जॉब आईटी जॉब ये वो. सो sentimentally a person may sometimes say that oh he wants to give up his duty, or sometimes as a devotee we also feel whatever seva is given to us, मुझे मुझे लगता है मैं सब सेवा छोड़ दूं, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डू दिस सेवा, लेट मी सिंपली डिस्ट्रीब्यूट चरणामृत, आई एम सो फॉलन आई कैन नॉट डू माई ड्यूटीज प्रॉपरली. So he said, so many faults are there in me. And then we say, let me give up the seva only. So certain such tendencies to give up the seva, to give up the duty comes, and a guilt takes over. So this guilt, because we are coming to the section of lust now. So this guilt, is guilt good or is good guilt bad? What do you say? Any answers for this? Is guilt which comes after doing something wrong good or bad? Anyone would like to say? You can unmute and speak. I hope you understand my question. Yeah. Guruji, if the guilt is not taking us towards inaction and is inspiring us to take more and more shelter of Hare Krishna, then it is good. Okay. So Ashish Pro is telling the guilt is good. One Pro is telling guilt is good. Okay. Yeah, Kaushik Pro said guilt followed by repentance is good. Vishang Prabhu is telling nice, more understanding. Okay. And which guilt is bad? The guilt which makes us self-sabotage or we can't perform the action. Yeah. So he said guilt with lamentation and guilt which leads to depression or inaction. So the guilt also sometimes does like that. So it is another temptation. Like because of temptation, we get distracted. And now, because of guilt, again we may get distracted. So if after guilt we are handicapped, we don't want to do anything, and we say I want to give up Krishna consciousness only because I am so fallen that even Krishna cannot help me now. I am so fallen. Krishna cannot do anything good to me. Such guilt is very very bad. So here is telling sometimes similarly while executing duties, a person may feel I'm not qualified to do my duty. I can do others' duty very nicely. But here it is said, no, do your duty faultily than doing someone else's duty nicely. Even if you may be very competent to do someone else's duty, do your duty faultily. Now, somebody may say, Prabhu, what is my duty? Nowadays in Kali Yuga, it is very difficult to understand what is the duty for me. क्योंकि ना वरना पता है ना आश्रम पता है, सब कंफ्यूजन चल रहा है, सब खिचड़ी है, कभी लगता है कि ब्राह्मण हूँ, कभी लगता है क्षत्रिय हूँ, कभी मन करता है ब्रह्मचारी बनूं, कभी बोलता है गृहस्थ के लायक हूँ, कभी लगता है यार गृहस्थ भी नहीं बन सकता, गृह में ही हूँ मैं तो, पॉसिबल ही नहीं है, और कभी लगता है संन्यास ले लो. सो रोज हर दिन नया नया आश्रम और नया वर्ण निकलता है हमारा, तो एक ही दिन में अलग अलग. So there's a very great confusion. What we are supposed to do? That's why, especially in Krishna, actually, I'll just tell you a joke. Huh? Don't take this seriously. This is nothing related to this. I was just talking to one devotee yesterday. So I was just telling this is just a brahmachari joke. Huh? Don't take it in a wrong way. It's brahmachari joke. So one devotee was I was just taking. We were discussing about Gurukula system and Varnashram system. तो वो बोले पहले के जमाने में लोग 200 300 500 साल जीते थे, तब बोले सब सही था, ये ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ और सन्यास चार चार. बोले अभी तो 60 साल जीना है, उसमें चार चार आश्रम फिट करना है. बोले कितना डिफिकल्ट है, बोले चार चार आश्रम फिट करो, बस 50 60 साल जीने वाले कब तक, बहुत मुश्किल है. बोले पहले ब्रह्मचारी बनो, चलो अभी गृहस्थ बनो, फिर वानप्रस्थ लो और फिर सन्यास लो. बोले हार्डली 50 60 साल जीना है, बोले उसमें भी मैक्स टू मैक्स 80 साल, उसमें भी इतने चार चार आश्रम फिट करो. तो बोले जाने दो यार, एक जो भी है गृहस्थ रहेंगे, ब्रह्मचारी इतना कितना ट्रेन चेंज करेंगे. कभी कभी होता है ना, अगर छोटा डिस्टेंस कवर करना है, अगर आपको दिल्ली जाना है और 2 ट्रेन चेंज करना है, ठीक है, 2 ट्रेन चेंज करना है, ठीक है, लेकिन चलो आपको मुंबई जाना है और मुंबई जाने के लिए आपको बोला 4 ट्रेन चेंज करो. बोले यार मैं प्रभु जनरल में चले जाऊंगा, प्रभु जनरल में, मतलब खड़े खड़े इतना 4 ट्रेन चेंज करूंगा, छोटा सा डिस्टेंस है उसके लिए 4 ट्रेन चेंज करूं.
बोले एसी ट्रेन है ब्रो, चार नहीं चाहिए, चार एसी ट्रेन बोले, छोटा सा सिंपल बैलगाड़ी में लेके जाओ, इतना चार चार इतना बार बार ट्रेन चेंज करो। सो वाज जस्ट टेलिंग मी दैट बोले पहले के जमाने में लोग 200-300 साल जीते थे, 1000 साल जीते थे, तो लगता था चलो 200 साल 150 साल उन्होंने अपना ये कर लिया, उन्होंने ये किया। हार्डली कुछ जी रहे लोग 50-60 साल, उसमें भी चार चार फिट करना, राइट। सो जस्ट जोक। मुझे ऐसा एकदम हंसी आया वो देख के, सोचने के बाद बात तो मतलब सही है, इतना सारा छोटा समय छोटा सा जीवन है हमारा। So here it is said that so today there is a great confusion. So what is our dharma? Our dharma is uh, our dharma is one, the duties which are given by bona fide spiritual master. That's why acting under the direction of bona fide spiritual master is very important. So now for us, what are the prescribed duties? uh, go to a spiritual master or go to bona fide devotees, take some instructions according, because they understand. We do not understand our varna ashrama, and there is no need to understand also. And spiritual master also, he will engage us in duties which are very supportive for our Krishna consciousness, which will enhance us. For certain people, certain instructions will be given. Okay, you do this kind of seva. Certain people, no, no, your nature is not suitable to this, you don't do this seva. So similarly, we have to go and take some kind of prescription. So then one can do anything and everything as per the direction of Guru. Yes, Kaushik Bro. Prabhuji, in this last line, it is written that as long as one is under the modes of material nature, he should perform action according to the modes, but also have a full sense of Krishna consciousness. Prabhuji, if one is having full sense of Krishna consciousness, he is indirectly beyond modes only, na? So why it is said that even being in modes, he can be in full sense of Krishna consciousness? How to understand this sentence? Like for example, it is full sense of Krishna consciousness means Mai Sarvanikar. It's a discussion about karma yoga only. He has not yet become bhakti yogi or has not become fully pure devotee. There are so many activities which we know that this is the way I am supposed to do. Like I am supposed to chant for Krishna's pleasure, or I am supposed to do this work for Krishna's pleasure. So I have Krishna consciousness. It is not that. But still I am under modes. So I don't do that activity like a very pure manner. Like I have to study for Krishna's pleasure. I know that. I have to study my mathematics, science, geography for Krishna's pleasure. But it is not that I'm studying it for Krishna's pleasure. I know sense is there. This is to be done for him. The results are to be offered to him. But I'm still under modes. So it is not exactly that I have become pure devotee. Full sense of Krishna conscious. It is not that he is fully Krishna conscious only while doing every activity. Then he's pure devotee only. But it's full sense of Krishna consciousness. Okay, he knows. So that's why even sadhaka is also sometimes called as pure devotee. Everyone is a pure devotee. Srila Prabhupada was asked how many pure devotees we have, and Prabhupada asked how many devotees we have. So he said we have this many pure devotees because currently the spirit is improved, but actions are yet contaminated. Actions are sometimes devotional, and actions are sometimes non-devotional. But at least उनका गोल क्लियर हो गया है, गोल फिक्स है, थोड़ा बाकी सब टाइम लगा रहा है। यहाँ पे ऐसा व्यक्ति मोड्स के प्रभाव में भी रहेगा, तो डिवोटीज में भी मोड्स का प्रभाव पड़ता है ना। although हम चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग इज अ फुल्ली स्पिरिचुअल एक्टिविटी, फुल कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी ओनली। लेकिन अगर कोई फुल कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी कर रहा है तो उसमें मोड्स का प्रभाव कैसे पड़ता है? लेकिन हमें रोज दिखता है, रोज का पास टाइम है, नींद अफेक्ट करती है, पैशन अफेक्ट करता है। तो ये थोड़ा सा एक फेज है ये डिवोटी के जीवन का। और प्रभु जी, अगर डिवोटी मोड्स में है बट तब भी प्रभु जी वो एक्शन तो जो परफॉर्म करता है वो स्पिरिचुअल मास्टर के डायरेक्शन में, उसके लिए प्रभु जी श्लोक अप्लाई नहीं होता ना कि वो अपने वर्ण और आश्रम जैसे स्पिरिचुअल मास्टर बताएंगे वो करेगा? मतलब वो यस, एज ए क्षत्रिय भी एक्ट कर सकता है, एज ए ब्राह्मण भी, एज ए वैश्य, या स्पिरिचुअल मास्टर के डायरेक्शन में। या ठीक है। लेकिन उसको डिफिकल्टी आएगी। मतलब ऐसा नहीं कि गुरु गुरु के एम्पावरमेंट से कुछ भी पॉसिबल है, देयर इज नो डाउट। बट जनरली गुरु विल ट्राई टू गिव यू सम सेवा which is suitable to your nature. But you see, in one longer sense, like now suppose Srila Prabhupada sent Sudama Maharaj, Sudama Prabhu to Japan. In one way, Sudama Prabhu said that time it is little difficult. I know I cannot sustain there. I will not be able to remain devotee if I go to Japan. But Srila Prabhupada took that risk. Okay, he said, even if you fall down, no problem. I will take care of your care. And you know the latter pastime. And actually, he went there. He did something good. He opened a temple. He opened a congregation. He gave pleasure to Prabhupada. But due to
weakness of heart and due to weakness of senses, he fell down there. And later he was very lamenting at the latter stage, कि अरे what happened to me? And during his last moments of death, just about to leave the body, suddenly got up and said, Srila Prabhupada, you saved me. You came and protected. So Srila Prabhupada actually went and protected him. But difficulties will come. It is not that key. So sometimes if our spiritual master or authorities have given us some seva, which is not, you feel that is not a suitable for you, your match. It may not be suitable sometimes. Or some seva is given as a matter of need or as a matter of your technical expertise also. Certain seva may be given, but you feel that this seva is little risky for you. So there is a full opportunity and scope for clarification. We should not think, अरे गुरु से आया करना ही पड़ेगा. No, you can clarify. And if they say, okay, despite of your weakness, continue doing. I need this, then fine. So one can clarify. And Prabhuji, last one, Prabhuji, we can see that our psychophysical nature does not fit only in one varna. Means sometimes we may like to read, sometimes we may like to do management, and sometimes we may do Kshatriya activities also. So in this Kali Yuga, we have multiple psychophysical natures. So that is तो वर्ण also संकर वर्ण संकर है ना, वर्ण संकर है मतलब सबसे एक ही साइकोफिजिकल नेचर है, सेंस ग्रेटिफिकेशन. इसलिए प्रभुपाद ने उसके बारे में इतना इतना भी नहीं बोला कि करो नहीं करो. बहुत सारे लेक्चर होते हैं, फाइंड योर धर्मा, फाइंड योर ट्रू नेचर. मेरे इतने सालों में अभी तक मैं ही सच में बोला तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या है अपना. कभी जैसा होता है इतने सालों के बाद भी कुछ कुछ आइडिया लग गया कि एक्सपर्टीज कहाँ का है अपना, वो समझ में आ जाता है अपना. उतना ठीक है. कृष्णा की सेवा में अल्टीमेट पर्पस क्या है? कृष्णा की सेवा में लगाना है. और डिवोटी के जीवन में नेचुरली जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वही सेवा आप ज्यादा से ज्यादा लोगे, वो नेचुरल है. तो इसलिए इतना नीड कंपल्शन नहीं है भक्ति के लिए वो कि फाइंड करना ही है, करना ही है, करना है. सबसे आसान तरीका है करते रहो करते रहो करते रहो. आप देखो ना वॉइस में ही इन द इनिशियली व्हेन वॉइस समबडी जॉइंस अवर यूथ सेंटर्स, ही इज गिवन ऑल काइंड्स ऑफ सेवा. He is given cleanliness, dustbin, झाड़ू पोछा. Like when I joined Krishna consciousness, for many months, years together, my only one seva was there, dustbin cleaning. That was a seva which I used to like very much. Even my from first year days, डस्टबिन क्लीन करना, हाथ गंदा डाल के जब डस्टबिन सड़ गया है, क्या ग्लोव्स डाल के कैरी बैग डाल के उसको साफ करना. अब कोई बोलेगा ये सेवा किसको पसंद आएगा? ऐसा समाऊ ऐसा एक अच्छा लगता था उसमें साफ करने पर. तो ईगो का हमारा एक ईगो ईगो फ्लैट होता था इतना गंदा सेवा करने के बाद भी इन सम ऑफ. लेकिन फर्स्ट ईयर से अच्छा लग रहा है. लेकिन बाद में धीमे धीमे नहीं, और भी अच्छे सेवा लगने लगे दूसरे. सो कीप ऑन डूइंग सम सेवा, कीप ऑन रेंडरिंग सेवा, एंड ऑटोमेटिकली वी अंडरस्टैंड. एंड अदर्स विल अंडरस्टैंड. इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, अदर्स विल तो श्योरली अंडरस्टैंड. प्रभु ये आपका स्ट्रांग पॉइंट है. तो भक्ति के लिए इतना भी नीड नहीं है साइकिल नेचर निकालो, नेचर निकालो. कुछ समय के बाद अपना नेचर मिल जाता है. और एटलीस्ट नाउ आई कैन से फॉर मी, लाइक सम देयर इज सेड ना, there is one scientist who says, Einstein said or someone, if you get a work which is according to your nature, you don't have to work for a day. If you get a work which you like, you don't have to work for a day. There is no work for such a person. Like now, suppose somebody has got an interest, the area where he's very interested in and skilled in. He doesn't feel like the example of Einstein. He was so absorbed in science, so absorbed in science. He got married, and just one day before marriage, he was told, "Arey, your marriage is there." बोले हाँ क्या? Okay, he just did a marriage and he went back. And after marriage also, for months together, he was sitting in lab only. And one friend came and asked him, "Oh, Einstein, do you know from where your lunch and breakfast and dinner is coming? Every day you are eating it." So he said, "I don't know. Somebody might be giving it. I don't know who is giving." He said, your newly wedded wife is giving." Oh, yeah, yeah, yeah. He said, "Hey, don't you feel that we should go and meet her?" Oh, yeah, yeah, yeah. So you see, now Albert Einstein, now he's not brahmachari, sannyasi or something, because he has something work which he has found out his absorption. He's fully absorbed in it. He's not at all affected by anything in the world. So that means, so like for me, so now, for me, I was just saying, for me now, there is no Radhesham Prabhu or any other brahmachari you see. There is no, because there is no work only. That, oh, I have to work this man. So every work is like something which you like. I have to do seva only. So we do every day is Saturday, Sunday for us. Every day Saturday, Sunday. There is no Monday, Tuesday, holiday, or PL, or Yatra leave. Every week is a Yatra. Like Kartik Yatra experience in every week. Because
Like suppose some of us go to Kartik Yatra, we feel very nice. For us, every week is only that. There is nothing new. And even some devotees feel Janmashtami, Gaur Purnima. These are all special days, surely. But for us, every day like Janmashtami only. Every day is Janmashtami, every day is Gaur Purnima. Because like, everyday life is similar only. So there is not much difference. So like that. So somebody gets a life like that or work, which is his interest, then he doesn't have to work. So no need to too much discuss about psychophysical nature. Just render service. Slowly we'll come to know. Okay, we'll go to Prabhu verse number 36 now. The most famous verse now. And the most applicable verse for everyone. The most troubled verse for everyone. Verse number 36, 3.36. Very easy to remember. We should memorize the number of this shloka also. Because we'll keep on quoting this shloka hundreds of times in your preaching career. Or we may suffer the consequences of this shloka hundreds of times and lifetimes only. So remember the shloka number 3.36. Arjuna vacha अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वर्ष्णेय बलाद् इव नियोजिता. So he says अनिच्छान्, without even my desires. पापम चरता चरती मतलब चलना या चलना. मेरा जो बुद्धि है ये मेरा जो मन है वो पाप में चरता है. मेरे इच्छा के बिना पाप को चरने, जैसे गाय चरने जाती है वैसा मेरा मन पाप चरने जाता है, पाप को चरता है मेरी इच्छा न होने के बावजूद भी. सो व्हाट इज दैट ही इज आस्किंग. यस ब्रो, प्लीज रीड द ट्रांसलेशन. Arjuna said, O descendant of Vrishni, by by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? Like sometimes recently there is that in Pakistan, some of you might be aware that in Pakistan they kidnapped the train and they killed so many hundreds of people. And like some terrorists and this people, they kidnapped the train, entire train only in Pakistan. And after that they force a person to do something. They put a gun and they say, you do this, if you don't do this, surrender yourself, do this, like that they do. And they exploited women or they exploit everyone that do this, as if by force you are supposed to do something which you don't want to do. So what is that? He's asking like that. Arjuna is asking. Okay, bro. Purport? But a living entity, as part and parcel of Supreme, is originally spiritual, pure, and free from all material contaminations. Therefore, by nature, he is not subject to the sins of the material world. But when he is in contact with the material nature, he acts in many sinful ways without hesitation, and sometimes even against his will. As such, Arjuna's question to Krishna is very sanguine as to the perverted nature of the living entities. Although the living entity sometimes does not want to act in sin, he is still forced to act. Sinful actions are not, however, impelled by the supersoul within, but are due to another cause, as the Lord explains in the next verse. Yeah, so Prabhupada is clearly telling, don't think that super soul की कृपा से क्या करूं प्रभु मैं. आई एम पापी जीवात्मा, भगवान की इच्छा से मैं पापी हूँ, भगवान की इच्छा से ही मैं राक्षस हूँ, या भगवान की इच्छा से ही. कभी कभी लोग अपने गलत एक्टिविटी को बोलते हैं कि भगवान की इच्छा से हो रहा है. नहीं, यहाँ पे बताया ऐसा मत सोचो सुपर सोल की वजह से हो रहा है. वो सुपर सोल ने सैंक्शन किया है, लेकिन उसके उसका रीजन है कि तुमने बहुत जोरदार डिजायर मारा है. So he said, because of our very, very strong adamant desire, super soul sanctioning it, something which is wrong, which is allowed. So here it is said that actually we are supposed to be free from all material contamination. We are not subjected to the sins of this material world. But because of contact with material nature, even against our will, sometimes we act. So what is that force? What is that force which one forces a person? So that is called as karma. And okay, okay. Can you someone read this 36 purport?
बलते विद्याभूषण। In verse 34, the Lord indicated that desire, such as speaking to others' wives, is firmly fixed in the senses and mind. Arjuna now asks us question concerning this. O Krishna, born in the Vrishni dynasty, inspired by what thing Kenu Kenu प्रयुक्त। Prayukta, Prayukta, does the Jiva commit sin? Though he does not want to do it, knowing that it is forbidden by the scriptures, he does it as if by force. The desire to engage in sin is produced in the dependent person by being subjected to the desire of an instigator. Who is this? Who is the instigator? Is it the Lord or the Jiva's previous impressions? It cannot be the Lord who inspires a person to do the sinful acts, since he is the merciful and only placed by the role of witness. Nor can it be impressions, since those are dull unconscious things. Vrishneya, meaning the descendant of Vrishni, is formed according to the rule Sub- Subradhichai Dhak. Note, the ruler states that ओके ओके फाइन। सो यहाँ पे बोल रहा है वो इंस्टिगेटर कौन है, वो धोखेबाज या वो टेररिस्ट जिसने हमारे ट्रेन को अटैक किया, वो कौन है? क्या वो भगवान है या क्या वो मेरे पास्ट इम्प्रेशंस है? कभी कभी हम हमारे पास्ट इम्प्रेशंस को बोलते हैं ना, क्या करूँ प्रभु, मेरे पास्ट इम्प्रेशन से खराब है प्रभु, इसलिए बार बार धोखा खाता हूं मैं। लेकिन यहाँ पे वो लिख रहे हैं पास्ट इम्प्रेशंस इन इटसेल्फ आर डल मैटर। लाइक सपोज कोई किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया है, उसको पता है उसको रसगुल्ला नहीं खाना है, उसको रसगुल्ला नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, लेकिन उसके सामने बराबर रसगुल्ला है। अभी देखो, उसका रसगुल्ला खाना या ना खाना उसके हाथ में है, वो चॉइस उसका है। लेकिन तो क्या ये भगवान है कि उसके सामने बार बार रसगुल्ला ला रहे हैं? ठीक है चलो, भगवान की कृपा से ही आया, अल्टीमेटली सब कुछ भगवान की कृपा से ही होता है। तो रसगुल्ला आ भी गया, तो क्या वो रसगुल्ला दोषी है? कोई बोलता है अरे यार इस रसगुल्ला ने आप में से कभी किसी ने बोला होगा ना, प्रभु ये स्वीट राइस ने तो धोखा दे दिया प्रभु, बाप रे फिरनी ने बहुत धोखा दे दिया, क्यों बहुत भर भर के खा लिया मैं। अभी मुझे बताओ, फिरनी आके आपको फोर्स की क्या जो खाओ, या रसगुल्ला आके आपको बोला क्या, गला पकड़ा क्या आपका कि खाओ? कौन खाया? हम ही खाए। तो धोखा दिया कौन? कोई बोलेगा नहीं प्रभु मेरा इंप्रेशंस धोखा दिया। अरे इंप्रेशंस तो डल मैटर है, वो थोड़ी है, वो तो सामने आपके सामने आया। धोखा दिया कौन फिर? तो यहाँ पे इसके बारे में चर्चा हो रही है, वो धोखा देने वाला व्यक्ति कौन है जिसने हमको किडनैप किया, हमारे बुद्धि को किडनैप कर दिया। 3.37 श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येह विनिमयरिणाम विद्धि एनम हि वैरिणाम। ओके, टू डिवोटीज कैन रिसाइट दिस श्लोका। दिस इज श्लोका फॉर मेमोराइजेशन ऑल्सो, एग्जाम में भी आएगा। और 3.37 याद रखना है, नंबर 3.36 एंड 3.37। जब भी काम का प्रभाव बढ़े तो याद करो। यस प्रो, समवन कैन रिसाइट टू श्लोक, टू डिवोटीज कैन रिसाइट द श्लोका। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणम्। डिबो, थैंक यू। एनी अदर डिवोटी? नो नीड टू बी हम्बल। श्रीभगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजोगुणसमुद्भव महाशनो महापाप्मा विधियेन मिह वैरिणाम्। वैरी नाम, वैरी नाम मतलब सबसे खतरनाक दुश्मन। वो कौन है दुश्मन? वो कौन है आतंकवादी जिसने मेरे मन में मचाया है आतंक? वो है वैरी नाम। कौन है मेरा वैरी नाम? तो यहाँ पे बताया है महाशनो महापापमा, ऐसा आतंकवादी है कि वो बड़ा पाप करता है, सारे गलत पाप करता है। और उसका जन्म कैसे हुआ, कहाँ जन्म लिया वो आतंकवादी? कभी कभी बोलते ना, जैसे कि महात्मा गांधी को मारने वाला था ब्राह्मण हिंदू, तो बोलते हम ये आतंकवादी कौन था? तो ये इसका जन्म किधर हुआ, समुद्भव, कहाँ से पैदा हुआ ये, किस कौन से चक्की का आटा खा के पैदा हुआ ये पाप, जो इसके पास इतनी ताकत है, ये मुझे धोखा दे देता है, मेरे पूरे राज्य पे किडनैप कर लेता है,
तो उसका समुद्भव, उसका जन्म कैसे हुआ? तो उसकी माँ का नाम है रजोगुण। रजोगुण की माँ से जन्मा हुआ, ये रजोगुण के देश में जन्मा हुआ, वो है पापी, वो है आतंकवादी। और वो कौन है? उसका पहला भाई है, उसका उसके दो बच्चे हैं रजोगुण के। रजोगुण के दो बच्चे के नाम क्या है? एक है काम, उसका नाम है काम। और उसका छोटे भाई का नाम है क्रोध। काम और क्रोध, क्रोध की दूसरी माँ भी है, वो है तमोगुण। तो काम और क्रोध, इन दो लोग, ये दो भाई जो है, बड़ा भाई और छोटा भाई, ये है वो आतंकवादी। और ये दो आतंकवादी व्यक्ति को किडनैप करते हैं और उन लोगों को गलत काम करने के लिए फोर्स करते हैं, यहाँ पे बताया है। ओके, ट्रांसलेशन। The Supreme Personality of Godhead said, "It is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is that all devouring sinful enemy of this world." हम्म, तो देखो भगवान ने कभी कभी, जैसे भी रिसेंटली ये ट्रेन में जो अटैक हुआ पाकिस्तान में, या इसके पहले नेपाल, एक नेपाल प्लेन क्रैश, नेपाल सॉरी नेपाल नहीं, एक बार प्लेन हाईजैक हुआ था काठमांडू। काठमांडू प्लेन हाईजैक हुआ था। आई थिंक आप लोगों को पता हो गया, पता नहीं मुझे। काठमांडू में एक बहुत बड़ा प्लेन हाईजैक हुआ था वहाँ पे। तो कभी कभी पता ही नहीं चलता किसने किडनैप किया है। तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाता है, हाईजैक कर लिया है, सब कुछ है, पर पता ही नहीं चल रहा है कि कौन है, क्यों हाईजैक कर रहा है, क्या पर्पज है, पता नहीं चलता है। लेकिन जब आइडिया लग जाए तो गवर्नमेंट को डिसीजन ले पाएगा कि किसने किया। जैसे हम अगर हमारे वॉइस में कभी कभी चोरी होती है, अगर चोर पकड़ा जाए तो कुछ तो एक्शन ले पाएंगे। लेकिन चोरी हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है कौन चोरी किया है, तो केस बहुत कॉम्प्लिकेट बन जाता है, पता ही नहीं चलता क्या करे। सो यहाँ पे भगवान ने हमें, गुड न्यूज़ है कि हमें क्लू दे दिया है कि चोरी, मन की चोरी या बुद्धि की चोरी जो करने वाला व्यक्ति है वो कौन है। तो वो चोर है लस्ट ओनली, जो सबसे बड़ा खतरनाक एनिमी कंडीशन सोल का है। ओके, परपट पढ़िए मेघराज को। When a living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the mode of passion. Or, in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust as milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt. Then again, when lust is unsatisfied, it turns into wrath. Wrath is transformed into illusion, and illusion continues the material existence. Therefore, lust is the greatest enemy of the living entity, and it is lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world. Wrath is the manifestation of the mode of ignorance. These modes exhibit themselves as wrath and other corollaries. If, therefore, the mode of passion, instead of being degraded into the mode of ignorance, is elevated to the mode of goodness by the prescribed method of living and acting, then one can be saved from the degradation of wrath by spiritual attachment. The Supreme Personality of Godhead expanded himself into many for his ever increasing spiritual bliss, and the living entities are part and parcels of the spiritual bliss. They also have the partial independence, but by misuse of their independence, when the service attitude is transformed into propensity for sense enjoyment, they come under the sway of the lust. This material creation is created by Lord to give facility to the conditioned souls to fulfill these lustful propensities. And when completely baffled by the prolonged lustful activities, the living entities begin to inquire about their real position. This inquiry is the beginning of the Vedanta Sutras, wherein it is said, Athato Brahma Jigyasa. One should inquire into the Supreme, and the Supreme is defined in Srimad Bhagavatam as Janmadi Yasyato Anvayad Itarascha, or the origin of everything is the Supreme Brahman. Therefore, the origin of lust is also the Supreme. If therefore
Lust is transformed into love for the Supreme or transformed into Krishna consciousness, or in other words, desiring everything for Krishna, then both lust and wrath can be spiritualized. Hanuman, the great servitor of the Lord of Lord Ram, exhibited his wrath by burning the golden city of Ravana. But by doing so, he became the greatest devotee of the Lord. Here also, in Bhagavad Gita, the Lord induces Arjuna to engage his wrath upon his enemies for the satisfaction of the Lord. Therefore, lust and wrath, when they are employed in Krishna consciousness, become our friends instead of our enemies. Prabhuji, you are muted. This is a very, very beautiful purport. Actually, if you just read this one shloka very nicely, Prabhu, one will get lot of hints. Sometimes we read hundreds of Shastra, sometimes we read, that's good, we should read. But just this one purport, if we try to little bit think about, we are given a clue here of what is going wrong in our life. Sometimes I see people become frustrated when they are disturbed by lust, and then they go to YouTube, search for hundreds of videos, inspirational videos, motivational videos, this video, that speaker, and the motivation stays only for few seconds or few moments and few days, and then again a person feels कुछ काम नहीं करता है motivational video, फिर से again same thing continues. So here in this, if we take this verse very seriously, actually all clue what is needed, that is given to us by Lord only, Supreme Lord only. So now again I am highlighting certain vital points in this purport. You can maybe note down or underline, because these are the some hints given that what is the main root cause क्या है, क्योंकि जब तक root cause identify नहीं होगा तब तक हम अलग अलग solutions निकालो, काम नहीं करेगा इतना. लेकिन सबसे पहला यहाँ पे बताया है, एक्चुअली जो लस्ट का जो फोर्स है, ये लस्ट कितने जितने मात्रा में लस्ट ट्रेवल करता है, देन वन शुड रियली थिंक हाउ मैडली आई लव कृष्णा. मीन्स रादर देन लस्ट, थिंक अबाउट लव, कि एक्चुअली मैं कितना मिस कर रहा हूँ. क्योंकि अगर लस्ट का जो फोर्स मेरे मन में इतना ज्यादा है, तो इसका मतलब एक्चुअल में वो लव था. तो मतलब कृष्णा का जो प्रेम है कितना, मतलब मेरा डेस्परेट नीड है कृष्णा का प्रेम के लिए. वो लस्ट का फोर्स भी हमें याद दिलाना चाहिए कि हाउ बैडली आई नीड कृष्णा, हाउ बैडली आई नीड कृष्ण कॉन्शियसनेस. बिकॉज लस्ट का प्रभाव इतना ज्यादा है, मतलब आई एम मिसिंग समथिंग इन माई लाइफ. एंड वॉट इज दैट? आई एम मिसिंग दैट लव. सो यहाँ पर जब भी आप लस्ट अफेक्ट कर रहे हो, दूध दही को याद कर लेना. एक्चुअल में था दूध, लेकिन अभी एक्सपीरियंस आ रहा है दही का. दही का एक्सपीरियंस आ रहा है क्यों? क्योंकि पहले दूध था, तो पहले मैं कृष्ण का प्रेमी था, लेकिन आज धोखा हो गया है मेरे साथ. तो जब भी लस्ट अफेक्ट करे या दूध दही खाओ, तो उसको याद करना कि जब भी दूध जब पियोगे तो याद करना दूध इज लाइक लव एंड दही इज लाइक लस्ट. इसका मतलब ऐसा नहीं कि दही मत खाना, इसको दही खाना है खा लेना, लेकिन बेसिकली वी कैन रिमेम्बर दिस दैट. एंड यहाँ बोला है लस्ट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ लिविंग एंटिटी. एवरीवन, नो मैटर हु वी आर इन दिस वर्ल्ड, लस्ट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी. किसी व्यक्ति को पता चल गया आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो उस पर वर्क करना चाहिए. एंड इट इज सेड ये लस्ट ही हमें मटेरियल वर्ल्ड के अंदर बांध के रखा है. तो अभी ये लस्ट और व्रैथ, ये दो भाई है जो पूरा आतंक मचाता है जीवन में. नाउ देर इज अ मेथड गिवन हियर दैट दूध को दही होने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो यहाँ पे लस्ट को, पैशन को इग्नोरेंस में जब कन्वर्ट हो जाए, तो ये दो भाई जन्म हो जाते हैं. एक पहले लस्ट था, क्या अपना लस्ट, दैट इज काम, एंड बाद में व्रैथ, इग्नोरेंस. ही सेड इसको हमें मोड ऑफ गुडनेस में लेके जाना है. एंड हाउ टू टेक दिस टू मोड ऑफ गुडनेस? बाय प्रिस्क्राइब मेथड ऑफ लिविंग एंड एक्टिंग. दिस इज अ वेरी गोल्डन स्टेटमेंट. प्रिस्क्राइब मेथड ऑफ लिविंग एंड एक्टिंग. प्रिस्क्राइब मेथड ऑफ लिविंग एंड एक्टिंग. तो कई बार हम इसको निग्लेक्ट करते हैं, इस प्रपद के स्टेटमेंट को. You see in the life of devotee also, Prabhu, like sometimes when somebody is in the college life, और कॉलेज लाइफ में बेचारा लस्ट का एकदम खतरनाक शिकारी होता है, उसको दिख जाता है कॉलेज में ऐसा आमी कामेर दास, वो काम का दास बन जाता है. और प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट लिखा, मटेरियल वर्ल्ड बनाया ही इसलिए है कि व्यक्ति अपने लस्टफुल प्रोपेंसिटीज को फुलफिल करे, बाद में बैफल हो जाए.
पूरी तरह फ्रस्ट्रेट जब हो जाए, तब व्यक्ति जागरूक होता है। यहाँ पे लिखा है ना, when somebody becomes completely baffled by prolonged lustful activities, अनेक अनेक जन्मों में उसने टेस्ट मार लिया है सारा lustful activities का, और पूरी तरह लात खा लिया है, तब व्यक्ति की जागरूक होता है। वो पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में। तो एक हिसाब से देखो ब्रो, मेजोरिटी काफी डिवोटीज का, हम सबका ऐसा हो, थोड़ा थोड़ा मात्रा में इसका एक्सपीरियंस तो हमें आता है। पूरा जीवन कॉलेज में एक्सपीरियंस कर लिया है, भक्ति में आने के पहले एक्सपीरियंस कर लिया है, अच्छा खासा माया का लात खाया है, समझ में आया है कि माया कुछ नहीं है, तुच्छ है। उसके बाद जागरूक हुआ जीवन में, अरे मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों भक्ति कर रहा हूँ, क्या करना है, तो दिस। सो एक हिसाब से दैट इज ट्रू। बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट को बहुत महत्व दिया है, जो मीन्स आई फील दैट दिस इज अ वेरी वाइटल स्टेटमेंट। एंड इफ यू निग्लेक्ट दिस स्टेटमेंट अननेसेसरली, समटाइम्स हम काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मेरा जीवन में से लक्ष्य क्यों नहीं जा रहा, और ये नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। इस एक स्टेटमेंट को थोड़ा सा याद रख लो। ऑल्दो बोलना आसान है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद ने, लेकिन ये जीवन भर का संघर्ष है, ठीक है, तो मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। प्रिस्क्राइब मेथड ऑफ लिविंग एंड एक्टिंग। ओके, यहाँ पे फोकस दिया है प्रिस्क्राइब मेथड ऑफ लिविंग एंड एक्टिंग। Okay, I need some inputs from devotees. What do you understand by this statement? All of you can unmute and speak quickly. Fat, 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 fat. That what do you mean? I'll just note it down. Whatever you say, I'll just note it down. What do you mean by prescribed method of living and acting? Here it is said, if somebody understands that this is the way he should be living and acting, then one can actually get some help from this. Okay. Sleeping on time and waking up on time. Okay, these are all very down to earth things we are writing. Okay, no problem. Sleeping on time and waking up on time. On time means earlier, not I sleep on time at night 12 p.m. and wake up on time at morning 10 a.m. early. Okay, any other things? Following four regulative principles. Very good. Following four regulative principles. Okay. Any other? At least grossly, right? No? At least grossly. Hmm. Any other prescribed method of living and acting? Prabhu ji, sadhana, doing Very, very the good. sadhana properly. Do the prescribed sadhana given to you. Like somebody's told, okay, basic minimum, you chant, just a minute. Okay, you're told chant 8 rounds, chant 16 rounds, whatever, 10, 25 rounds, something is prescribed to us. Do that one. Okay, do the prescribed sadhana, especially most important is chanting, then reading and hearing. Now, if somebody does this prescribed methods which are prescribed to him, he doesn't neglect them, then what happens? Then the influence of all these energies gets reduced. But when we neglect this prescribed method, something which is like, and when an Ayurvedic doctor, he gives us some prescription, he tells us, okay, don't eat this, do that, do this, then there is a little bit health improves. But we want to take medicine also, and at the same time we want to uh, not follow the doctor's prescription, then becomes very tough. Okay. Yes, Prabhu. Any other thing? What is meaning of prescribed method of living and acting? I think acting means Yes, Prabhu. varnashrama dharma. Okay, very good. Acting also means live as per varnashram. So whatever choose the activities and the duties or act according to your varnashram. Thank you very much. Nice point. So because this entire emphasis on this only, that somebody lives as per his duties, varnashrama, somebody follows the prescribed sadhana which is given to him, then one can reduce the influence of this two enemies on his life. And that is the reason we have the sadhana card right now. Sometimes some people feel that why sadhana card and all these regulations and parental controls and all these things are there for us. No,
Because what happens is when such things are there, like the sadhana card, or we keep a track of our sadhana, then immediately we understand. It is like a compass. ओ प्रभु, आपका रीडिंग यूरिंग बहुत कम हो रहा है, तो आश्चर्य मत होना अगर आपको ये दो राक्षस जो है वो अफेक्ट करेंगे। क्यों? आपका जैसे कि हम मेडिकल टेस्ट करवाते हैं और हम बोलते हैं प्रभु आपका विटामिन डी कम हो गया है। सपोज आप डॉक्टर के पास जाते हो और बोलते हो, तो डॉक्टर बोलता है आपका विटामिन डी कम हो गया है प्रभु। सडनली हम क्या करते हैं, रोज सूरज में जाएंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, दूध पियेंगे, ये पियेंगे, कैल्शियम खाएंगे, अलग अलग चीजें खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक मेडिकल टेस्ट है। तो साधना कार्ड भी एक हमारा मेडिकल टेस्ट है जो बताता है कि भाई देखो भाई तुम्हारा रीडिंग हेयरिंग कम हो रहा है, तुम कभी भी तुम्हारा इम्यूनिटी कम हो सकता है भक्ति में, या तुम्हारा मटेरियल कंटेमिनेशन को अफेक्ट कर सकता है। तो इसे इसको कीजिए। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, ये करने में, ये साधना करने में, साधना कार्ड भरने में या प्रिस्क्राइब मेथड के में हमको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस जो है वो चला जाता है। हमें दूसरों के मतलब मुझे बोला गया शास्त्रों में रीडिंग करो, उसके हिसाब से जीना पड़ता है, एक फ्रस्ट्रेशन आता है। लेकिन यही है, अभी हमारा चॉइस, इट इज आवर चॉइस, आई वेदर वी वांट टू फॉलो द टेररिस्ट of lust, or whether we want to follow advice of superior Vaishnavas। ये दो चॉइस है। तो हम अपने अपने मन की सुनना है तो ये टेररिस्ट जो अटैक कर सकता है, या तो दूसरा ऑप्शन है नहीं भाई, लेट मी लिव माई लाइफ एज पर द एडवाइस ऑफ द वैष्णवास। सो ये बहुत वाइटल चीज है प्रिस्क्राइब मेथड ऑफ लिविंग एंड एक्टिंग के लिए। अगर हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, हम प्रॉपर पथ्य फॉलो नहीं करते हैं, तो थोड़ा उसका प्रभाव बढ़ता है। क्योंकि जैसे कि वो ट्रेन, जैसे पाकिस्तान में वो ट्रेन जो है वो किडनैप हो गई सपोज। क्यों होता है? क्योंकि वो अलग कहाँ पे किडनैप किया उसको, उसको सिटी के अंदर किडनैप नहीं किया किसी ने। वो जब वो एकदम एकदम कॉर्नर में जा रही थी, पूरे पहाड़ियों से जा रही थी, जहाँ पे कोई नहीं आ सकता, वहां पे किडनैप किया उस ट्रेन को। एकदम सिटी के बीचों बीच किडनैप कोई कर नहीं सकता है। वैसे ही हम जब अकेले होते हैं, हम जब वीक होते हैं, हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स जहाँ पे है, वहां पे वो अटैक करता है टेररिस्ट भी। ऐसे एकदम भक्तों के संग में रहता है, जब बिजी रहता है तो वो अटैक नहीं करता है वो। हमें प्रिस्क्राइब मेथड ऑफ लिविंग, लिविंग मतलब लिव इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ वैष्णव। जब हम अकेले हो जाते हैं तो इसका प्रभाव टेररिस्ट अटैक कर देता है। तो दिस इज I thought to take this theme because this is only one word only, prescribed method of living and acting. Hmm. This word is a very vital word here. And again, some other clues are given now. How one can dovetail or one can change again back from curd to milk। कर्ड से लेके मिल्क में कैसे वापस कन्वर्ट करना है, तो पॉसिबल नहीं है, मटेरियली पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है, डिजायर एवरीथिंग फॉर कृष्णा। कृष्णा कृष्णा अर्थे अखिल मीन्स he said desire everything for kama krishna karma arpane। So now if we desire everything, oh money, I want crores of rupees for Krishna, oh this I want this for Krishna। Now somebody says I want to enjoy this sense gratification, okay I will enjoy this for Krishna, but is now we may say I may enjoy rasgulla for Krishna, that means what I will only take Krishna prasadam। So initially if we take only Krishna prasadam also, then also lust is reduced to the great extent, desire everything for Krishna, then slowly gradually one is purified। So somebody wants to enjoy lust. Okay, I'll get married and I will, as per Krishna's desire, as per dharma, I will do. So you see, everything can be spiritualized. So he said, how? I desire everything for Krishna. And the Prabhupada is writing at the conclusion, when lust and wrath employed in service of Krishna consciousness, they will become your friends instead of enemy. Now, lust is, the opposite of lust is love, and opposite of anger is also compassion, right now. So when both these two powerful force which are there, if they are used for, if these two powerful forces are used to do something good, then they become our enemy. Instead of becoming our enemies, they become friends. Like a dam water is there, the flood water is there. Sometimes the flood water they store in, or the when a lot of rains come, they store in the dam. And if it is uncontrolled, dam is left uncontrolled,
it can create great devastation. What if it is employed? It can produce electricity, it can be used for farming. They will become friends. The same extra water which came, they will become our friends instead of our enemies. Similarly, these two forces which are there, lust and wrath. So the tendency of lust is there because the tendency is love to there. Originally, it is tendency to love, to show affection to someone, to show compassion to someone. That is a tendency. But when it is not shown, love and compassion are not shown, then they become lust and wrath. So similarly, we have to use this powerful force in service of Lord. Then we'll get protected, safe from our enemy. Okay, I think this was a very important shloka. We can have some question or discussion if it is there. And it's already 8:10. 5 minutes we can have, then we can pause for today. Yes, bro. Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मतलब हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि पहले मिल्क, मतलब हम लोग पहले मिल्क थे, लाइक एग्जांपल में, बाद में हम लोग योगर्ट बने। तो मिल्क मतलब कृष्ण प्रेमी थे पहले हम। तो प्रभु जी, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम लोग कृष्ण प्रेमी थे। तो प्रभु जी, इससे मतलब कैसे समझे कि क्या होता है कभी कभी, कि मतलब कभी कभी होता है कि कृष्ण कृष्ण का मतलब कुछ करते हैं तो कृष्ण को मतलब भूल जाते हैं, हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि कृष्ण प्रेमी थे वगैरह हम लोग। तो ये काफी बार होता है प्रभु जी, कभी कभी। प्रोपद नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखते हैं, एवरीवन हैज गॉट टेंडेंसी टू लव, और एटलीस्ट कि आप इतना नहीं मानते कि हम कृष्ण प्रेमी थे, लेकिन हम प्रेमी तो है ना? इतना तो सब मानते हैं, हम सबको प्रेम चाहिए और हमें प्रेमी तो करना है। तो प्रोपद लिखते हैं अपने नेक्टर ऑफ डिवोशन में, एवरीवन हैज टेंडेंसी टू लव समथिंग और समवन। somebody loves his family members, somebody loves his cats and dogs. आजकल इंडिया में इतना फैशन आ गया है प्रभु, मतलब मैं शॉक हो गया। कुत्ते कुत्ते प्रेमी इतने आ गए, हर जगह गली गली में पेट शॉप, पेट हॉस्पिटल, और सब लोग अलग अलग प्रकार के कुत्ते लेके घूम रहे हैं। अलग अलग नए नए महंगे महंगे लाख रुपए का, करोड़ रुपए, कितने लाखों रुपए के कुत्ते आ रहे हैं। एंड लोग प्रेम दिखाना चाहते हैं उसको। दैट मीन्स जीवात्मा में ये लव करने का टेंडेंसी नेचुरली है। अगर किसी को देश का, कोई देश का प्रेम कर रहा है, कोई कुत्तों के प्रति प्रेम कर रहा है, कोई अपने जॉब कंपनी को प्रेम कर रहा है, तो प्रेम करने का टेंडेंसी तो नेचुरली है। अभी रही बात कृष्ण प्रेम है कि नहीं, लेकिन इतने समय पहले सबसे पहला स्टेप है कि कृष्ण के प्रति प्रेम, प्रेम तो है हमारे, ऐसा मत सोचो कि प्रेम नहीं है। लेकिन हम देखते हैं इस दुनिया में कितना भी प्रेम करें हम, लेकिन इस प्रेम सेटिस्फाई नहीं होता है। प्रेम जो है उसका सेटिस्फैक्शन कंप्लीट नहीं होता है, धोखा 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 खा देता है प्रेम। कितने सारे बोलते हैं ना, अरे वाइफ ने धोखा दे दिया, अरे बच्चों ने धोखा दिया, बच्चों को इतना प्रेम किया, जीवन भर बड़ा किया, लेकिन धोखा दे दिया। देश के लिए मैंने इतना जीवन दिया, देश ने ही धोखा दे दिया। बाद में कुत्ता मर गया, धोखा दे गया, 5 साल में इतना प्रेम किया उसको मैं, धोखा दे दिया। सो वी सी दैट सारा जो प्रेम का टेंडेंसी वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। सो एटलीस्ट ये प्रेम का टेंडेंसी एक बार भगवान के प्रति लगा के देखो, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली किसी न किसी चीज को प्रेम करना ही है। चलो, प्रभुपाद और आचार्य लोग हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, भले हम माने ना माने कि भगवान के प्रति में प्रेम है नहीं, लेकिन शास्त्र बता रहे ओरिजिनली ये भगवान के प्रति का प्रेम था, जो भी रिडायरेक्ट होके कुत्ते प्रेम, ये प्रेम, देश प्रेम, अलग अलग प्रेमों में घुस गया है। लेकिन वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इट इज लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर। आप डेजर्ट में हो और आपको एक बूंद पानी दिया जाए चरणामृत की तरह, कोई बोलेगा प्रभु क्या है ये, एक ड्रॉप पानी, दिस इज टू लेस, क्यों दिया मुझे वो पानी? लेकिन आपको क्या चाहिए? हजारों बिस्लरी के बॉटल चाहिए, आपको पूरा टैंक चाहिए, बट डेजर्ट के अंदर, इतने धूप के अंदर। सिमिलरली जो कृष्ण का प्रेम है वो इट इज लाइक अ टैंक एंड रिजर्वायर ऑफ वाटर, ओएसिस, वैदिक ओएसिस बोलते ना, वैदिक ओएसिस ऑफ इंस्पिरेशन। तो ओएसिस है वो, पूरा 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 भंडार है वो इसका। तो हम अभी बिलीव ना करें, लेकिन बिलीव करके देखो। बिलीव करने में कोई रिस्क नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। वैसे भी नहीं तो हमारे दूसरे प्रेम चल ही रहे हैं, लेकिन अगर हम भगवान पे थोड़ा भरोसा रखेंगे तो कोई लॉस नहीं होगा। तो क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, अनेक अनेक, है ना? थोड़ा एक्सपीरियंस भी आ गया है हमें भी कि कृष्ण का चैंटिंग जब हम करते हैं तो कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, और बाकी कोई मटेरियल साउंड वाइब्रेशन हम लेते हैं तो कितना बोरडम निकलता है, फ्रस्ट्रेटिंग निकलता है। So at least we can get a clue that there is a propensity to love someone, whether we are loving Krishna or not, but there is a tendency to love someone. And this tendency can attain its perfection only when we love Krishna or Krishna's devotees. Thank you, bro. Yes, Ravi, bro. Hare Krishna, Guruji. Like in the last verses purpose, in the last it is mentioned that on the transcendental platform, um,
the material distinction doesn't matter. That means a person can change his varna. So there were two examples given. First was Vishwamitra and second Parshuram. So, Praj, like my question is regarding Vishwamitra. Like, so Prabhupada has mentioned that his changing Varna was also on the transcendental platform. Parshuram is like justified, but like I'm not confused about this Vishwamitra's changing his Varna. How it can be transcendent on the transcendental? Because like that happened because of fight between Vishwamitra and Vasishtha, and then multiple person like that. So, Mm. Okay. So maybe exactly uh, if you go from the if you go from the material perspective, at least in the story, it appears that he wanted to change his Varna because of envy, not a transcendental platform. It appears that he was Raja Kaushik, and Raja Kaushik प्रभु कौशिक से लेके फिर वो आगे जाके धीमे धीमे, लेकिन actually he could change, rather if you take, he could change the Varna only when he went to transcendental platform. Otherwise he could elevate himself from Kshatriya to Rishi then, but he could not elevate him to Brahma Rishi. And if you see एक एक स्टेप जो है ना, कैसे कैसे उसने अपना वरना एलिवेट किया, कैसे हुआ वो, उसका सेल्फलेसनेस जब बढ़ता रहा, सेल्फलेसनेस बढ़ता रहा, तो जितना सेल्फिशनेस है उतना वो नीचे 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 जा रहा है, जैसे शूद्र है एकदम सेल्फिश, कोई रिस्क नहीं लेता, शूद्र मतलब कोई रिस्क ही नहीं लेगा, वो बस सेल्फिश व्यक्ति। लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेने वाला व्यक्ति कुछ तो रिस्क लेता है, वो क्या है, चलो वैश्य आ गया, वैश्य आ गया, थोड़ा तो रिस्क लेता है और कुछ तो समाज से थोड़ा सेल्फलेस भी बनता है, तो हल्का सा, मतलब बिजनेस माइंडेड है लेकिन थोड़ा इन्वेस्ट मारा, कुछ किया, चैरिटेबल वर्क किया, थोड़ा सेल्फिश भी बन गया। उसके आगे थोड़ा और रिस्क लेता है वो क्या रिस्क लेता है, अपना क्षत्रिय अपने जान की रिस्क लेता है, और ब्राह्मण, तो जब ये रिस्क मतलब थोड़ा सेल्फलेसनेस आना इंपॉर्टेंट है रिस्क में। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उसका सेल्फलेसनेस बढ़ रहा था धीमे धीमे धीमे, तो सेल्फलेसनेस ऑल्सो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी, सेल्फलेसनेस एंड ऑल दिस क्वालिटीज आर द क्वालिटीज, इफ यू डू 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज में दिस ऑल सेल्फलेसनेस ऑल्सो। सो जब वो बढ़ता है तभी वो वरना चेंज कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाता है मीन्स ऐसा व्यक्ति। तो आगे जाके उनको जब ब्रह्म ऋषि बनना था, तो he had to become transcendental, otherwise he could not do that, means he accepted that okay मैं वशिष्ठ कम्युनी से कंपटीशन नहीं मार सकता जब तक मैं स्टेज पे नहीं पहुंचता सेल्फलेसनेस के ब्रह्म ऋषि, तो आगे जाके फिर वो ब्रह्म ऋषि बने। या अभी उनका शुरुआत जो था कंपटीशन का शुरुआत वो एनवी की वजह से हुआ था, उनको वशिष्ठ मुनि से एनवी थी, लेकिन ओनली व्हेन ही वेंट टू द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म देन ओनली एक्चुअली ही गॉट एलिवेटेड टू द हायर पोजीशन। So similarly, we can get a clue that in Krishna consciousness, although I may be born in Shudra family or lower than Shudra family, but because now I'm executing the duties in Krishna consciousness, which are beyond Varnas and Ashramas, so we cannot make a distinction. He's a Kshatriya Brahmachari, he's a Shudra Brahmachari, he's a Shudra Vaishnava, or he's a Brahmana Vaishnava. No, Vaishnava is a Vaishnava. So he's transcendental to all these Varnas and Ashramas. So, although he may be selfish in the beginning, but only he could elevate himself to higher stage only when he exhibited that selflessness or he went to the transcendental platform. yes, sir, thank you. Okay. Yes, Proji. Malkesh. Yes, Prabhuji. Yes, so in one of the verse, it is mentioned like Rajoguna means काम और क्रोध that belongs to Rajoguna. So ऐसा कोई कैटेगरी है क्या, जैसे बाकी जो चार बैड क्वालिटीज हैं उसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं क्या, मतलब इट इज सतोगुना और तमोगुना? हाँ ब्रो जी, ये आगे के चैप्टर्स में आता है, पूरा जो लास्ट का 6 चैप्टर्स है, उसमें सब क्वालिटीज के बारे में बताया, ये मोड ये पैशन से आता है, ये एंगर से आता है, ये इल्यूजन से आता है, और इसको कैसे करना है। लास्ट के जो भगवद गीता के 6 चैप्टर्स है, मोड्स ऑफ नेचर चैप्टर जो आता है, और डिविजन इन फेथ, उसमें बहुत कैटेगरीली दिया है कि जो व्यक्ति गुडनेस में है उसका फेथ कैसा रहेगा, जो गुडनेस में उसका डिस्क्रिमिनेशन कैसा रहेगा, जो पैशन में उसका फेथ कैसा रहेगा। तो ये लास्ट के 6 चैप्टर्स में बहुत डिटेल में बताया गया है। तो चैप्टर नंबर डिविजन्स ऑफ फेथ नाम का जो चैप्टर है, उसमें एकदम काफी दिया है कि किस प्रकार का, और एक 14 चैप्टर मोड्स ऑफ नेचर, उसमें कैसा जीवन रहेगा उसका, वो बताया गया है, एकदम कैटेगरी सिस्टमेटिकली बताया गया है भगवद गीता में। ओके,
Okay, so Prabhu, just a minute before we stop. Today is 13th. Next is 19th. And next is 26th and 27th. Okay, next week to possible for me. 1920 is possible. 26th and 27th of this month, I'll update maybe in the next week only, or after on 25th or 2024 I'll update, because I'll be in Ujjain that time. Mostly I'll try my best to give 26, 27 also, but I'll be in Ujjain that time, and Spurti camp is also coming, but most likely we'll have. And by this, I think third chapter will to get over now soon, next week only, and then we'll jump to fourth chapter. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhasya kripa sindhubhyo च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय।